All right, Bhumika. So let's draw some cards for Scorpions. Yeah, Let's sure. see their readings. So let us see what's happening in the lives of scorpions right now. Justice. So a lot of things that were stuck in your life is actually coming a full circle. You will receive the fruit of the hard work that you have been doing. And if at all you have wronged someone, this is the time where you will be repaying your karma. So be very, very mindful of your actions, be very mindful of your thoughts, be very mindful of how you wish to see others. Because when we wish harm to someone, it comes back to us threefolds. So this is one thing which is coming up off the top of the deck. We can also check how money and finances are going on for the scorpions. Right. I'm seeing a lot of layoffs happening for people. A lot of people are unemployed. So the finances might be slow moving, but yes, there is a certain stability in the lives of the Scorpio collective. So what I see is maybe they have not received the kind of hike that they expected. They might not be receiving the kind of increments or the appraisals that they have been expected. But right now their finances are pretty stable and they are able to run their life in the way they have been living. They are able to maintain their lifestyle, they are able to maintain their savings. It is not like they are looking at anything difficult in terms of the career and finances. But yes, we can always check the love part as well, Love, because yeah, that is something which makes the world go round. absolutely. Temperance. So, what I see for scorpions right now is that a lot of balance is coming in their love life. They are trying to. So, if there is one problem that is happening in their general life, they are trying to balance it through their love. So, at this point in time, the scorpions might be feeling extremely emotional. They might be holding the people close, the people who are already in their life. They might be holding them very, very close right now. They might be extremely attached to them, or maybe they might want that they should not lose them. So this is a little bit of an emotional time as far as love is concerned. But other than that, they are in a very good place. And as long as you don't go and do something wrong in the society, you are good to go. Perfect. So I think that's a good summary of love, finances, and the general overall well-being of Scorpions. So does this apply to any specific age group, or what are the kind of people we're looking at in this card reading? See, if we look at the cards that we drew for the collective, two of them are from the major arcana. So this actually goes on for the major collective. But yes, if we talk about the finances, this is actually the young generation as of now. Now I would suggest that this is somewhere between 25 to 35 years of age. So Right. they might be going through certain issues in their life right now, and many of them might want to move on from where they are right now. Hmm. But then right now things are a little slow and they might not get the breakthrough that they are seeking. Okay. I think that's one thing most young people need to learn, patience. And Yes. that's what this time is teaching them. Superb. So let's move to the next one, Bhumika. Let's look for Libra. Libra. What is your zodiac? I'm a Capricorn. Capricorn. Well, I'm a Libra, so I'm excited, You curious. are a Libra. So, general energy is that of celebration, jubilation, and enjoyment. You are actually, I mean, Libras are actually in a place where they are happy around whatever they are doing. They're happy. In general, their energy is positive at this point in time. Now, Libra, if we talk about Libra, they are very, very relationship oriented. So, when we talk about Three of Cups, it is all about people coming to bed together, people celebrating something good, something positive happening in everything around them. So right now, Libras are pretty in a pretty good situation if we talk about the general energy, and they are actually in their element, if I may say so, and it's a good thing. Now we can check on the finances and career for the Libras.
again, we have similar kind of a situation in career and finances. They are trying to build something up. They are trying to, something hasn't worked out the way they expected, and they are trying to build up from there. It is like rising from the ashes. It is like gathering the broken pieces and bringing it together, and to, to move forward in some direction. But one thing very good about this Libra energy here is that they are very, very stable in their efforts. They are very, very determined in their efforts, and they are doing a lot of thinking. Now, when we talk about swords, Four of Swords, swords is actually pertaining to the air element. So this is a very, very Libra energy of trying to put everything together, even when the entire world is falling apart. So I would say that career and finances, they might have suffered a setback, but they are not deterred by it. They are not afraid of what will come in the future, and they are in a pretty good space mentally. Even though financially they might be a little broke, but mentally they are in a very resilient state, and it is only going to get better from here. Wow, interesting. And for love, let's see. I think Libras are full of love anyway. Libras are full of love, and they are very, very trusting. Again, we got a swords card. So this is Five of Swords. So they might have recently gone through something, and they are holding on to a little bit of those emotions, little bit of that fear and that pain, and they somehow feel that like they are closed off to new relationships as of now. But at the same time, they are not wallowing in pain, so that's again a good thing. Now, with all this going on, the Libras are in state that talks volumes about the resilience of Libras. So even though they're considered to be one signs who put relationships before anything and everything, but what I perceive from my cards in this reading is that they are the ones who are being the true warriors, and they are actually moving forward in full force with all the positive thoughts and actions. So it's a great time for Libra. This is actually the evolutionary time for Libra, if I may say so. Wow, superb. Have you noticed a shift uh, in most of the zodiacs? Have you noticed a shift, a different shift कि मतलब इतने सालों से अगर कोई struggle कर रहा है तो a lot of struggle has ended for any of them, or something exciting is happening in their life? So, if we talk about collective in general, so yes, I have seen a lot of shifts happening. So, what I have seen is that people are somehow, of course, human beings are very, very resilient. But nowadays, what I've realized is that people are not afraid of taking the plunge, and that is something that has changed. Don't think before taking an action, and you just jump into something negative that also creates an impact on the entire society process. And that is something that I've observed throughout the zodiac signs. It is not pertaining to a certain zodiac, but throughout the zodiacs I've seen that. Now, of course, I've also seen certain people like uh, Sagittarius comes before Capricorn, and it is a fire sign, and it is always considered to be, a person who is restless, who would always be running away and, traveling and thinking and having philosophical feelings, not being very, very practical. But of late, I have observed, I mean, I have a lot of Sagittarians around me. So I have observed that these guys have started to move towards the energy of Capricorn in some way or the other. And they have started to settle down, to ground themselves, and to actually gain the knowledge. Because they are ruled by Jupiter, they are full of knowledge. The philosophy, knowledge, and everything comes naturally to them. But since they are always running around, it was always difficult for them to keep that knowledge imbibed and, to go deeper into it. But as of now, I'm seeing those people evolve and actually sit and understand the realities of the world and understand how things are done, where these lessons are coming from. And that's a big thing. Okay. So where do you see the collective consciousness going towards? Now, I see it not going towards the upper chakras, not going towards the ascension for most people.
they are still in the Maya, they're still in the illusion. But that's just how, my perspective has been through my clients' work, through my own personal reflections and my observation of society. तो आपको क्या लगता है भूमिका? What do you see a pattern or something that gives you a deeper insight about where humanity is going? So basically, what I have observed while working with people and through my personal experiences also, that people are actually getting there is actually a very broad division in people. जो माया में है वो पूरी तरीके से माया ही है उनके लिए. They are not even concerned. They don't even have faith. To be honest, they lack the basic faith. They feel कि जो हमने इन हाथों से कमा लिया, जो हमने कर लिया, that is the truth. That is all there is to the world. And then there is one part of the collective who is in that knowing कि हमसे बड़ा कुछ है, हमसे बड़ा एक एनर्जी है, हमसे बड़ा एक यूनिवर्स है, या हमसे बड़ा कोई भगवान है जो हमें गाइड करता है, जो हमें हमेशा प्रोवाइड करता है, जो हमारा हमेशा ध्यान रखता है. तो वो जो है ना, वो ड्रिफ्ट जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. सो पीपल हु आर, आई मीन, ऑफ कोर्स मटेरियलिज्म इज नॉट बैड. मनी इज नॉट अ बैड एनर्जी. मनी इज एट द एंड ऑफ द टाइम एनर्जी है. हर किसी को चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ पे भी चाहिए, नॉर्मल पाथ पे भी चाहिए. बट टू मेक इट, बट मनी इज मीन्स, इट इज नॉट द एंड. तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि मनी ही एंड है. सो दे कांट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. दे डोंट सी द डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ एंड दे डोंट stop to stare at the trees or observe the things that are happening around them. Because वो consciousness उस level पे raise नहीं होता है जहां हम ये सोचें कि अगर ये है तो कैसे है. How is it कि हम तो आके जंगल नहीं उगा के गए, पैसा देके तो ये नहीं हुआ, ये कहाँ से आया. सो दे डोंट थिंक इन दैट सेंस. बट अगर आप मेरे से पूछो मेरा व्यू पॉइंट, तो हर किसी का एक टाइम आता है. एवरीवन has that timing when they get into that spiritual side. They get in touch with their real self. और वो होता है तभी जब लाइफ में कोई एक छोटा झटका लगता है. For some people it takes a lot of time, even after झटकास लगते Yeah, हैं. कुछ लोगों के साथ ये होता है कि एक झटका लगा and they get back into their senses and realize कि okay, this is what is happening. तो honestly सबको जाना उसी रास्ते है. yeah, true. बट कौन कितने टाइम पे निकलता है, कौन कितने टाइम पे पहुंचता है, वो अलग अलग है. देर आर सो मेनी फिलोसफीज. आई एक्चुअली डोंट गेट इन टू द डिटेल्स कि ये Hmm. ग्रिड वर्कर्स हैं, ये इस टाइम तक, इस टाइम लाइन पे, Hmm. इस टाइम लाइन पे. बिकॉज मुझे लगता है कि द मोमेंट योर कॉन्शियसनेस Hmm. awakens, you might take that quantum leap Quantum any leap. time. Hmm. और वो सिर्फ इट कैन बी मोमेंटरी. वो मोमेंट Yeah. में कभी कभी आपका चेंज होता है. सो आई वुड नॉट स्टिक टू टाइमलाइंस, बट Hmm. यस, एवरीवन अल्टीमेटली हैज टू रीच देयर. राइट, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड दैट मेक्स मी थिंक कि बहुत लोगों को बहुत झटके लगने के बाद भी वो लोग नहीं जागते, बिकॉज दे आर सो रेजिलियंट दैट इवन दैट झटकास डोंट मेक एनी डिफरेंस इन देयर लाइफ्स. सो आई हैव ऑल्सो सीन पीपल नॉट चेंज एंटायरली टिल द लाइफ टाइम्स. मतलब उनका पूरा जिंदगी चला जाता है, दे आर स्टिल द सेम. एंड आई ऑल्सो थिंक दैट द रीजन दैट दे हैव बीन इनकारनेटेड was to learn a lesson, right? The higher soul wanted them to learn a lesson, but for unfortunately their eyes were still shut, they were ignorant, और वो lesson सीख नहीं पाए. So how do you see those, like do you think about these things, that okay, this soul that I know, okay, could be a person, a family, friend, कोई भी हो सकता है. आप देखते हो उनको कि यार ये I'm trying to change them, I'm trying to make them realize कि बॉस तुम गलत कर रहे हो, it's not going right, change your patterns, but they still don't listen. Now as a light worker, you know that this is going to have repercussions. So what do you do? See, honestly, we are just messengers. We can just deliver the message. If the person is not ready to receive that message, we cannot force it. Yeah. So मेरा ऐसे cases में ये रहता है कि I let them be, I let them do what they are doing. In fact, there's a very interesting anecdote in this. So I used to be, जब मैं banking में थी, तो I had we used to sit in a bay and there were 10-12 people sitting there and we used to talk about everything and anything. So they knew that I do tarot and things like that, and we used to talk about it sometimes. And there used to be discourses, कुछ questions, answers, ये वो. So
one of my subordinates, she asked me a question. She said, so you do all these things, but मैं तो इसमें नहीं बिलीव करती. मुझे तो लगता है कि ये सब नहीं होता. जो मैं अपने कर्म करती हूँ मुझे उसी का फल मिलता है, ये मिलता है. तो मैंने कहा ओके फाइन. I'm not here to confront anyone. So she says, नहीं नहीं मुझे बिलीव कराओ. मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं आपको बिलीव नहीं कराऊंगी. तो शी सेड, नहीं मुझे बिलीव कराओ. आई मीन आई रियली वांट टू नो, आई रियली वांट टू सी, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड. तो मैंने उसको एक ही चीज बोली. मैंने कहा मे बी इट इज नॉट योर टाइम येट. जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम्हें वो चीज अपने आप समझ आएगी, तुम अपने आप उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाओगी. बिकॉज यू आर कॉन्शियस एंड यू आर ऑलरेडी सेट एन इंटेंशन दैट आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू नो. एंड यू नॉट बिलीव विद इन अ मंथ she was sitting at my place and we were discussing and she wanted कि आप मुझे please healing दो because I am really feeling restless. And it's been 2.5 years since then. और जितनी बार भी बात होती है she says you kind of initiated me into spirituality just by saying कि मैं believe नहीं कराऊंगी. So मेरा हमेशा ये फंडा रहता है कि yes, if we are talking, I will share my view, I will share the message that I am receiving, but I will not force it down your throat. Because when your time is right, you will automatically realize that. तो मेरा मानना यही है. Plus we always know कि I mean I'm a past life regression therapist as well, so I know I have seen so many regressions and I myself have been through 3, so I have understood कि एक लाइफ टाइम में लेसन लर्न नहीं करोगे ना, अगले में वो 10 times होके आपके Yeah, पास आएगा. absolutely. And that will be very painful. एंड इवन अगर आप लाइफ टाइम में भी देखो तो एक झटका लगता है वो माइन्यूट लगता है, फिर उसके Correct. बाद लगता है उसके और जोर का आता है, फिर और जोर का आता है. Correct. अंटिल द यूनिवर्स सेज कि नहीं इससे नहीं होगा, इसको उठा ही लो, हाँ, नेक्स्ट टाइम में देखेंगे. सो वो अनफुलफिल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, अनफुलफिल्ड कर्मा, अनफुलफिल्ड लेसन्स वही होते हैं जो आपको इस चक्र में फंसा के रखते हैं. सो द सूनर यू exactly. अंडरस्टैंड. Absolutely. And that's very well said. Wow. So, yeah, I think that's what the whole, that's, I think you said right about the divide happening, and I can pretty much see कि वही हो रहा है कि एक तरफ के जो लोग हैं उनको समझ रहा है they are now going backwards and अपनी गलतियां सुधार रहे हैं to go towards the forward path. और जो दूसरा साइड है लोगों का, they are just going with the flow. And that brings me to understanding, Bhumika, what made you shift from a marketing executive, right, for 20 years you were Yep. in marketing, बैंकिंग एग्जीक्यूटिव फॉर 20. banking, yeah. So what made that switch into coming on this side of the road, talking with angels, doing healings? So this is something that started at I mean, when I was younger also, I used to have prophetic dreams. और मेरे को घर के अंदर जाते ही सेंस हो जाता था कि क्या कुछ तो हुआ है और क्या हुआ है. Okay, आई so यूज्ड टू गेट. I want to know at least two or three stories or insights which really made a shift कि नहीं मैं यही करना चाहती हूँ. This is my calling, as you यस, mentioned to me earlier. आई विल टेल दैट. सो बेसिकली मेरा ये था, इंट्यूटिव शुरू से था. तो जब भी मैं किसी स्पेस में जाती थी एनर्जी सेंस हो जाता था, क्या कुछ होने वाला है तो ड्रीम में पहले आ जाता था. और तो व्हेन आई वाज यंग आई डिडंट हैव एनीवन टू डिस्कस दिस विद. आई वाज सो अफ्रेड बिकॉज वी वर एट दैट पॉइंट इन टाइम दिस वाज अ टैबू. अगर आपको ये चीजें हो रही है ना, आपका दिमाग गलत है, आपकी सोच की वजह से ये सब हो गया. So I started to shut myself off. But these things don't get shut down. धीरे धीरे करके ये चीजें बढ़ती गई. Then I used to मतलब बिना मतलब कि मैं बोल देती थी ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो हो जाता था. Then people used to get totally offended कि ये देखा इसने बोला था इसके 32 दांत है, इसके 32 दांत है, तो ये बोल दिया इसकी काली जुबान है. Then there came a time 2011 I was reading this book by Paulo Coelho. बुक का नाम था ब्रिडा. So I came across this term called tarot cards. So मुझे नहीं पता था tarot cards, और उस वक्त we didn't have this kind of an exposure to technology and knowledge and Google and all. Google was pretty new. Android phones हर किसी के हाथ में तब आए थे. I ended up searching और Flipkart पे एक small tarot box मिल रहा था. I ended up purchasing it. उसके साथ बुक आई. I just left it at that. I didn't read it.
बट मैं कार्ड्स के साथ मेरे को फैसिनेशन हो गया। आई यूज्ड टू सिट विद द कार्ड्स, आई यूज्ड टू रीड, राइट, जो मेरे को मन में लगता था इसके बारे में, वो मेरा फेवरेट पास टाइम बन गया। आई केप्ट प्लेइंग विद दोज कार्ड्स फॉर एटलीस्ट 5 years. 2016, I met this healer because I was going through a very tough phase. Going to one of the breakups, I was totally heartbroken और मेरा physical pain जा नहीं रहा था. So one of my friends took me to a healer, and I didn't believe in all these things. मैं जैसे ही उनके पास गई, मैं पहले बोल के गई थी हीलिंग वीलिंग नहीं लूंगी, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ बस. When I went, so she said, मेरे पास क्यों आए हो? And I, with tears in my eyes, I just said, I need my peace of mind back. And she said a few things. She took exactly same, उसने description दे दी कि ये हुआ है आपके साथ, ऐसे ऐसे ऐसे. Recently, this is the kind of person. Even the physical description. मैं फिर भी skeptical थी. I showed her pictures of 3 different guys with similar kind. She stopped at that person. Then I realized that no, ये चीजें होती हैं. सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, ये रियलिटी में होती है. इट वॉज नॉट समथिंग दैट मैनिफेस्टेड बिकॉज आई थॉट सो. देन मैंने उनसे हीलिंग लिया, तो उस वक्त उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा. शी सेड, यू आर इनटू एसोटेरिक साइंसेस. मैंने बोला, नो, आई डोंट डू एनीथिंग. ही सेड, नहीं, आई गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू आर इंट्यूटिव, यू डू समथिंग, मे बी एस्ट्रोलॉजी समथिंग. नहीं यार, कुछ नहीं. आफ्टर अ वीक और सो, मैंने उसको ऐसे ही, उसका मेरे से बात हो रही थी मैसेज पे, तो मैंने कहा, ओ यू आस्क्ड मी, मेरे पास एक डेक है, टैरो कार्ड डेक है, बट मैं कभी उसको यूज नहीं करती, मैं तो उससे खेलती हूँ बस. तो शी कॉल्ड मी एंड शी गेव मी द नेम ऑफ 2 people, एंड शी सेड के आई वॉन्ट यू टू टेल मी वॉट एवर मैसेज यू गेट फ्रॉम योर कार्ड्स. सो आई वेंट अहेड, आई टोल्ड हर कि ये इनका रिलेशनशिप है, ये डायनामिक्स लग रहे हैं, और अभी मुझे ये चीज लग रही है. Then she was the one who said, take out those cards and start reading. That is something that you really need to begin with. When was this? How long ago This was was this? in 2016. So for Okay. 5 years, I was already tuning into the cards, but I was not sure what it is all about. तो हमेशा से मेरा ड्रीम स्पेस ऐसा रहता था. देन अचानक से आई वाज स्लीपिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ अ सिंबल इन माय ड्रीम. तो नेक्स्ट डे मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, शी वाज इनटू रेकी. तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा मुझे ना ऐसे ड्रीम में एक सिंबल दिखा. मैंने कहा बहुत क्लियर था, आई कुड वेरी क्लियरली ड्रॉ इट एंड नो. मुझे बोलती है कि एक बार ड्रॉ करना, क्या सिंबल था. सो आई ड्रू. सो इट वाज द रेकी सिंबल फॉर इमोशनल हीलिंग, से है के. So that came in my dream. And cut to 2017, my Reiki journey started. And last year I did my Grandmasters, and I'm like, this is something that opens up. So मैं ये मानती हूँ कि यूनिवर्स आपको हमेशा रास्ता दिखाता रहता है. You just need to be aware, and you just need to take that action. Yeah. फिर then at 2018 I started my Facebook page, and it grew pretty well. People used to come to me for readings and all. उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, प्लस आई हैड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियली दे वर ऑल डिपेंडेंट ऑन मी. सो आई kept on going. So then there came a time when everything was settled, when I had enough savings in my bank account to run my house for at least 6-7 months, and to then I was ready to take that plunge. Plus my physical body, it started to show signs. All of a sudden I developed this lumbar spondylosis. मेरे पाँव का जो नीचे नीचे का हिस्सा होता है, जिसको तली बोलते हैं, वो बिल्कुल स्वेल हो गई. आई कुडंट वॉक, आई कुडंट ड्राइव, आई कुडंट इवन फुलफिल माय ड्यूटीज. फॉर 15 days आई वाज ऑन बेड रेस्ट. दैट वाज इट फॉर मी. मैं बेड रेस्ट से वापस आते, आई पुट माय पेपर्स, एंड आई डिसाइडेड नाउ आई एम गोइंग देयर एंड आई एम गोइंग टू डू इट. That was it for me, and touch wood, universe has been rewarding me. I cannot complain because मेरी चीजें मेंटेन होती रही हैं वैसे ही. माई लाइफ स्टाइल बिकेम मच बेटर, माई हेल्थ बिकेम मच बेटर, और टू बी ऑनेस्ट आई Super. गॉट टू और ट्रैवल क्या सो मच. चाहिए? और क्या चाहिए इंसान को? या Brilliant. So that was Bhumika's life journey of becoming grandmaster now and tarot card reader. Super. So what are those 3 beliefs, Bhumika, that you carry very close to your heart? Any top 3 beliefs? So
मेरा टॉप मोस्ट बिलीफ विच आई ऑलवेज टेल एनीवन कि या तो फेयर हो सकता है या फेथ हो सकता है। अगर आप बोलते हो कि मैं हायर पावर में बिलीव करती हूँ या करता हूँ, तो आपको फियर नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारा फियर आता है। बट जब वो फियर आता है तो एक बार अपने आप को रिमाइंड करो कि आई हैव फेथ, दिस दिस गॉड, दिस पर्टिकुलर हायर पावर इज वॉचिंग मी। एंड द मोमेंट, अगर अगर आप उसके बाद भी आप अपने आप को ठीक नहीं मानते, अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो दैट मीन समवेयर योर फेथ इज अ लिटिल Shaken. लेस। तो आपको थोड़ा अपना फेथ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो मेरा फर्स्ट बिलीफ यही रहता है कि फेयर और फेथ में से एक ही हो सकता है। सेकेंड बिलीफ सिस्टम दैट आई हैव इज कि no matter what, if I'm having a feeling, if I'm having a guidance, no matter what practicality says, no matter मेरे को कोई पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रीडर, कोई भी कुछ कह दे कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, अगर वो मेरे को इंस्टिंक्टिवली आ रहा है और एक बार से ज्यादा आ रहा है, आई विल डू इट। एंड टचवुड, दिस हैज नेवर फेल्ड मी, दिस हैज ऑलवेज वर्कड आउट वंडरफुली फॉर मी। Third thing which third belief system that I have is put yourself out there. You never know कि आपकी कही कौन सी बात किसको किस वक्त काम आ जाए। तो if you're thinking something, if you're feeling something and you feel कि this is the positive thoughts, this is the positive energy that you need to put it out there, don't hesitate, because you don't know who is getting, inspired by it, and किसकी लाइफ उससे चेंज हो जाए, and maybe that is your karmic debt to that person. Absolutely. Very much agree on all 3 points. Having been in the fear vibrational to then tapping into the faith and then tapping into the higher consciousness. And second point जो आपने बोला भूमिका, I'm keen to know कि how does one uh, differentiate between the silently guiding intuition inner voice versus the thoughts, the mind chatter guiding them. So how will one differentiate between these two? So what what I understood is कि maybe you might be having an obtrusive thought rather than an intuition. So basically मेरा जो गाइडिंग लाइट रहता है अपने एक्सपीरियंस से, तो इंट्यूशन जो होता है ना, वो आपको बार बार नज करता है। Suppose जैसे I'll take an example of me resigning from my job. Now my body was showing me signs. My mind was like कि नहीं, अब नहीं करना है, तुम्हें क्यों इतना, you can always take a break. For 20 years you've not taken a single break. You can always take a break from your career and do something and try something somewhere. But whoever was around me, they were like इतना अच्छा पे स्केल है, ये है वो है, थोड़े देर और कर लो, ये कर लो वो कर लो। I even ended up consulting one of the astrologers who my friend suggested, and she instilled more fear in me. What if you don't get another job? I said, in any case, I'm not looking for a job. I'm actually going to do something on my own. What if you don't get clients? तुम्हारा तो कुछ सोशल मीडिया प्रेजेंस फेसबुक पे जो है वो, उसमें से 80% तो आउट ऑफ कंट्री है। उसमें से कितना आएगा आपको, आप घर चला पाओगे, ये वो। So there was so many doubts around me. But then in my heart, I knew that this is it. और वो नच एक बार नहीं आई, वो नच 3 बार, 4 बार, 5 बार आई। एंड देन इफ यू आर नॉट पेइंग हीड टू योर इंट्यूशन ना, तो आपको साइन मिलते हैं। आप नहीं उसको मानोगे तो पहले आपके साथ छोटी सी चीज होगी, जैसे हम छोटा सा बात है, घर से निकलना है, इंट्यूटिवली लग रहा है कि आज नहीं जाना चाहिए, घर से निकलेंगे गाड़ी का टायर पंक्चर होगा। चलो आपने वो चला लिया, आगे जाओगे, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल पंप पे बहुत लंबी लाइन मिलेगी, आप उस टाइम पे पहुंच नहीं पाओगे। तो आपको इंट्यूशन ने पहले गाइड किया था, यूनिवर्स आगे आपको साइन भी दे रहा है। अब आप नहीं सुनना चाहते तो एट अ लेटर स्टेज यू माइट मीट विद एन एक्सीडेंट, और एट अ लेटर स्टेज समथिंग माइट हैपन इन योर लाइफ। तो मैं यही चीज मानती हूँ कि अगर इंट्यूशन है ना, वो अगर ऑब्ट्रूसिव थॉट है तो अलग चीज है। वो आपको बार बार नज नहीं देगा और यूनिवर्स आपको सिग्नल नहीं देगा उस चीज के लिए। सो देर इज अ लॉट ऑफ आई पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द साइंस दैट आई गेट। But this is interesting, Bhumika, because these signs, this intuition, these voices makes a lot of sense for people like you and me who are aware, who are still. But जो लोगों के लाइफ में स्टिलनेस चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती, उनके लिए दिस वुड बी
like finding a needle in a haystack. Yeah. So how do they make their life better, easier with this inner voice? What would be that one suggestion or that one advice that you would like to give them? So human beings as a species are actually intuitive. Every human being is intuitive. Now, Yeah. what makes us different is that we have learned to tune into our intuition. और ऐसा कोई भी human being नहीं है जिसको intuitively messages नहीं आते या signs नहीं मिलते. It's just that they are not conscious enough to understand it. मेरा एडवाइस लोगों को यही रहता है कि अगर आपको कोई चीज फील हो रही है, आपके आपके गट में फील हो रही है, तो उस चीज पे अटेंशन दो. बिकॉज जो चीज आपको गट में फील होती है वो कभी गलत नहीं होती. वो कहीं ना कहीं आपको एक साइन दे रहा होता है, आपका आपका फिजिकल बॉडी के दिस इज एक्चुअली हायर गाइडेंस. बाकी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे अगर आप ऑब्सेस्ड होते हो ना कभी किसी के लिए. आई मीन वी हैव ऑल बीन थ्रू दैट फेज इन आवर लाइफ व्हेन वी हैव बीन ऑब्सेस्ड विद पीपल और सर्टेन आउटकम. तो वो क्या होता है, वो आपका हार्ट रेस कराएगा. You will have butterflies in your stomach and your heart will race. But when you have that intuitive guidance ना, तो आपका gut जो है वो आपको ऐसे कंस्ट्रक्ट करके फील कराएगा कि this is where it is coming from. So that is one thing, one easiest way of tuning into your intuition. बाकी ये रहता है कि जितना obviously meditation is not everyone's cup of tea, but I always tell whosoever comes to me for consultation, I always say कि at least for 10 to 15 minutes in during the day or whenever you have time, बिना किसी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साइलेंस में बैठो. मेडिटेट भी मत करो, किसी चीज पे फोकस मत करो, लेट द थॉट्स कम एंड गो. बस साइलेंस में बैठो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन में. जिस दिन आप वो करना शुरू कर देते हो, योर एंटायर सिस्टम अलाइंस एंड यू गेट सो मेनी एपिफेनीज के देयर इज नो स्टॉपिंग यू देन. Excellent. I think that's the easiest thing that one can do, and I advise my clients the same. मौन रखो, आप कुछ मत बोलो, ना कुछ करो, बस बैठे रहो. बट इसमें यही होता है कि जब वो लोग मौन बैठते हैं, जो उनका स्पीकर है यहाँ पे वो फटने लगता है. बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन इन मोशन. And when they surrender in this silence, it goes crazy for them, you know. So should they be scared of that inner voices? What should they do? So usually बोलते हैं ना, the silence is always silence speaks louder than words. तो वो होता यही है कि हम जब साइलेंट होते हैं ना, तो वॉइसेस हमारे अंदर भी लाउड होने शुरू हो जाते हैं. बट दोज वॉइसेस टेंड टू डाई डाउन. अगर आप परसिस्ट करते हो ना, दोज वॉइसेस टेंड टू डाई डाउन. बट अगर उसके बाद भी कोई वॉइस आपके उसमें है ना, तो दैट मीन्स इट हैज अ मैसेज फॉर यू. तो ऐसे केस में यू जस्ट नीड टू राइट इट डाउन एंड मे बी जर्नल अबाउट इट और मे बी कंटेम्पलेट अबाउट इट. एंड फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट सिट स्टिल और साइलेंट, मैं नॉर्मली उनको ये एडवाइस करती हूँ कि टेक अ पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर थॉट्स यू आर गेटिंग. Yeah. तो आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ. यू डोंट हैव टू रीड थ्रू दैम, यू डोंट हैव टू थिंक कि ये क्या आ रहा है. और उसको लिखो और छोड़ दो, लिखो और छोड़ दो. देयर विल बी अ टाइम, या तो आप उसको रिलीज कर दोगे. अगर आपके मन में कोई थॉट्स हैं या फीलिंग्स है, कोई पेन है, तो लिखने से आपका रिलीज हो जाएगा. बिकॉज द मोमेंट यू पुट इट इन वर्ड्स, थिंग्स टेंड टू रिलीज. Yeah. या फिर क्या होगा कि वो आपको एक आप लिखो, जैसे ही आप लिखोगे ना, इफ देयर इज अ मैसेज इट विल डेफिनेटली स्ट्राइक यू, ये मैंने क्या लिखा. सो अगर आप साइलेंट नहीं बैठ सकते, तो दिस इज अनदर वे ऑफ ट्यूनिंग इनटू योर इंट्यूशन एंड Yeah. यू नो रिलीजिंग Emptying the व्हाट नो vessel. लॉन्गर सर्व्स यू. Emptying the vessel. यस. Brilliant. Let's do one last reading before we wrap up today's discussion. So आपको क्या आ रहा है intuitively, किसके लिए क्या रीडिंग करनी चाहिए? So I would say maybe we can see where the collective is headed Yeah. Okay. and Maybe what. maybe we can see the next few months for the majority of the people, if that's what's possible. Yes, let's see what is coming up for the collective. I mean, the global collective, if Yeah. I may Yeah. say so. I mean, we are not focused on one particular section. Right. Let's Because see what is separation is coming. an illusion, isn't it? Yeah.
Okay. What did you So find? we got amazing cards for the collective. Can I see them? So the first thing that is coming through very clearly from these two cards is that it is going to be an emotionally and mentally overcharged time for the collective. बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जो लोगों को इमोशनली ओवरचार्ज करेगा, जो लोगों के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स लेके आएगा, बहुत सारे थॉट्स लेके आएगा। और कभी कभी ये भी लगेगा that you're fighting against your feelings, you're fighting against your emotions, and it is difficult for you to control them. But then we can always control, we can always balance those emotions, and maybe first focus on filling our own emotional cup rather than going out and doing something for the collective or doing something for other people. तो इट इज नॉट बैड, इमोशंस आर नॉट बैड, बट इमोशंस को आप किस डायरेक्शन में लेके जाते हो, दैट इज समथिंग दैट पीपल विल नीड टू कॉन्शियसली वर्क ऑन। कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्रम्बल भी होंगी। नाउ दिस कुड बी इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, दिस कुड बी इन द फाइनेंशियल। इफ आई टॉक अबाउट my feeling, I'm getting this more in terms of the financial or economic conditions in the world. So there might be certain things crumbling down, there might be certain things which are actually causing a lot of unrest among people, and that kind of a thing will happen. But in the end the structure will come through. In the end हमें एक stability, एक balance, एक डिपेंडेबल फ्यूचर नजर आने लगेगा। बट दैट फ्यूचर विल नॉट कम इन इजी। एवरीवन फ्रॉम द कलेक्टिव, वेदर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, विल कम टुगेदर एंड मेक दिस वर्क। और जहां तक अगर हम प्लानिटरी उसमें बात करें तो प्लूटो इज एंटरिंग एक्वेरियस इन दिस एंटायर, जो अभी केप्रिकॉन में था तो लोग बोलते थे इट इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग। व्हेन इट इज गोइंग इनटू द एक्वेरियस, तो इट इज मोर अबाउट कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, The feminine, ह्यूमैनिटी। you तो mean to बहुत say? ज्यादा चेंज। The या feminine energy? relate no humanity in general. So Okay, Aquarius is basically a humanitarian. right. They believe in they believe in higher powers and Yeah. things like that. तो उससे उससे उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रम्बल होके समथिंग बिगर विल कम थ्रू, जहाँ पे Hmm. बहुत सारे लोग अपने इनपुट्स डालेंगे। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि नॉट जस्ट मी, मैंने अपने आसपास बहुत अलग अलग डोमेन्स के लोगों को देखा है कि हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब्स छोड़ने के बाद या तो खुद का कुछ काम करना शुरू किया, या कहीं ना कहीं they've started being public speakers, or some of them have become teachers. I've seen people Hmm. leaving their corporate job and becoming a teacher. Hmm. तो बहुत सारी चीजें वो चेंजेस आ रही हैं, वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं दैट पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट learning, they're more concerned about spreading the message, spreading the awareness. So this is what I can see in the next coming 6 months in the global system as well. बाकी थोड़ा अपहीवल तो होगा, और उस अपहीवल के लिए I think the humanity is prepared. I don't think so. We are a resilient Species. generation, so Yeah. we're very well prepared for all the challenges. Okay, so buckle up, guys. Things are about to take off for most of us. But thank you, Bhumika. I really enjoyed talking to you, learning Likewise. insights. And where can people find more about you and your work? So I have a presence on YouTube. I have a presence on Facebook. I'm also there on Instagram. My handle is @ the Earthy Mystic. I'm Perfect. available at all the platforms with the same handle, so they Awesome. can So I'll reach me. link all of them down below for the Yeah. convenience. And this was a pleasure, Bhumika. Thank you from the other side of the state. Thank Namaste. you so much, Ronak. It was pleasure talking to you. Superb, Bhumika. Thank you. Thank you, Thank you. guys. I'll see you in the next one. Take care.